Okay, Assalamu alaikum all. So this is the 30th session, or maybe you can call it the third last session of the course. So we were talking about the oblique incidence in the last class. And as a quick reminder, we were looking over the TE mode, which is defined by the electric field being perpendicular to the plane of incidence. Remember, plane of incidence is the plane which contains this k vector and this normal. And remember, in these oblique incidents, you always show these angles with respect to the normal. You do not do this with the interface. All right, don't do that. That's incorrect, because that's how we are defining all our equations. And we wrote all these equations for TE case, transverse electric, or S polarized wave case. EI, HI, you can look over the notes. These were the equations which we wrote last time. And where we left was that if we look over, so I really want you to keep seeing this figure. That's why I'm manipulating it like this. So if you recall, so we wrote that at the boundary, tangential E and H is continuous. So basically at z equals to 0, which is this point, your electric incident electric field, which becomes this. You can see that z is equal to 0, this term will go away, and reflected in the reflected, you will see this term would be go away, and this is the case. And similarly, the magnetic field would be the same. Hi plus hr is equal to ht. Magnetic field is also continuous, and you do the same thing here. Hi z is equal to 0 up karo, and you get this thing, and then so on and so forth. And last time we looked over it, that okay, if this equation makes sense, then all these exponentials needs to be equal. And that brought us to the laws of reflection and Snell's law, which we discussed last time. So now where we are, from moving from the last time, we are standing that okay, we established that those exponentials needs to be identical. So we have these couple of equations. EI plus ER is equal to E2, because if these three are equal, they will cancel out, and you have this equation 1 and equation 2. Obviously, we already established from the electric field that these all are equal, so that they will also go away. So the magnetic field equation, tangential equation, will become minus EI over eta 1 cos theta I plus ER over eta 1 cos theta I is equal to minus ET over eta 2 cos theta t. So these are the two equations. Remember, our goal was same as in the normal case, that we are interested into the reflection coefficient and the transmission coefficient. So reflection coefficient will be this guy, ER over EI. So you can see on the same things, on the same lines, which we solved for the transmission lines, and for the normal incidence case, we can easily figure out the ratio of these simultaneous equations. We can solve them. Once we solve them, we get, once to solve them to find this guy, we will have eta 2 cos theta I minus eta 1 cos theta t over eta 2 cos theta I plus eta 1 cos theta t. So these, and obviously this is for the TE case. This is also known as the perpendicular case, or S case. All these three subscripts are used in different books for representing this transverse electric
case. And you can and you should remember this eta 2, eta 1, all these are medium properties. Eta 2 impedance of the medium 2 dependent upon its epsilon, mu, frequency, sigma, and everything. And same as eta 1 would be that. And remember, this guy theta I is the incident angle, and theta t you will figure out from the Snell's law, because you know the medium properties, and you can figure out this. So you can figure out a reflection coefficient for the TE case. ठीक हो गया? And similarly, the transmission coefficient would be what? Transmission coefficient for the TE would be ET over EI, and you do it from the same equations, and you get uh, the similar relationships. You must be finding it very intuitively clear that if the theta I becomes zero, if theta I becomes zero, you can see all these relationships simplifies to your normal incidence case. ठीक है, यू का नजर आ रहा है बड़े अच्छे तरीके से, थीटा है जीरो होगा, ये वो सब वन हो जाएंगे. And you have all those normal incidence cases. And remember, this is same as you can, as in the transmission line case, this would be the same thing. The transmission TE is sum of these two things. अच्छा, अब अक्सर ऐसा होता है that instead of giving mu's and sigmas, or let's say if it's a lossless case, mu's and epsilons ki jagah, we can give relative permittivity or refractive index. So it's often useful to recast these equations in the form of refractive index, and that's very easy to do that. How? You can see this thing, that in this case, let's say ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको बड़े आराम से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कास्ट कर सकते हैं. कैसे? ईटा 2 किसके इक्वल होगा? ईटा नॉट ओवर eta naught over n2. You recall that. यहाँ इसको n2 अगर relative permittivity में करना है, तो this n2 would be epsilon r2. Various forms हैं इसको लिखने की, लेकिन often refractive index वाली equation is often it's useful. So let me write that. This becomes eta naught over n1 cos theta t, and this would become the same thing, eta naught over n2 cos theta I plus eta naught over n1 cos theta t. And you can see this thing, ये थोड़ा सा उसके eta 2 और इनके मुकाबले में ये जरा थोड़ा ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे, और ये ज्यादा आसानी से याद रहती है. जैसे मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली ज़बानी याद है, बिकॉज ये सारे n1 cos theta in the first medium and n1 cos theta I plus n2 cos theta t in the second medium. And similarly इस केस के अंदर भी if you want to transform it into the refractive indices, this would become what? This would become okay, मैं नीचे करता हूँ, इसी फॉर्म के अंदर TE will become 2n1 cos theta I n1 cos theta I plus n2 cos theta t. ठीक हो गया? अच्छा, अब ये मैथ तो हमने कर लिया. We did this math for these reflection and transmission coefficients. अच्छा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ एक आधा इंट्यूटिव रिमार्क भी निकाल सकते हैं हम लोग. वो क्या? that you can see this thing very clearly, that these reflection coefficients, if I plot them as a function of let's say this gamma as a function of angle theta I, we can make that curve actually. We can make that curve जहां पर
ये reflection coefficients and theta है, we can draw them. In other words, theta are, in other words, reflection coefficient and transmission coefficients are are independent upon the incidence angle. जैसा एंगल होगा उतना उतना रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होगा. और इसकी इंट्यूशन इस तरह भी आप देख सकते हो. अगर मैं, चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा. लेट्स से अगर एक इस तरह वेव आ रही है, दैट्स वन एक्सट्रीम केस. एंड दूसरा एक्सट्रीम केस, ये तो अलोंग द नॉर्मल है ना. दूसरा एक्सट्रीम केस है कि परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. उसमें तो कोई रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों ही जीरो हो जाएंगी, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो. और इंट्यूशन भी बता रही है कोई रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन अलोंग द इंटरफेस जा रही है. और एक और बीच में यू हैव ऑल दोस वेरिंग थिंग. और ये थोड़ा नॉन लिनियर फंक्शन है, क्योंकि कॉस कोसाइंस जो है वो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं. तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को लिनियरली बिहेव नहीं कर रहा है. इट वुड बी अ नॉन लीनियर कर्व. I do not plan to tell you ये किस तरह का कर्व होता है, लेकिन I think yeah. So that's all on this. कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोगों का? It's an easy thing. And basically इसको आप इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर मैं एक लेजर पॉइंटर लूँ, मिरर के ऊपर उसको शूट करूँ, नॉट मिरर के ऊपर एक्चुअली, मिरर के ऊपर करेंगे तो वो तो फुल रिफ्लेक्शन होता है. सो व्हाट यू कैन थिंक, अगर एक डायरेक्ट एक वाटर के ऊपर, लेट्स से वाटर सरफेस के ऊपर शूट करूं, सो द रिफ्लेक्शन at normal incidence will be different, and as I'm moving the laser pointer making an angle, the reflection and transmission will vary as a function of these angles. ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा खूबसूरत कमेंट है, मैथमेटिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स है. And let me ask you this question actually, and I want one of you answers this question. Initially, we assumed these are my coordinate system, X, Y, Z. Now, what if I say, let's say I say this is my X, this is my Y, right, and this is my Z. ये equations कैसे बदल जाएंगी? Anybody can comment that? और यहाँ सेम ही रहेंगी? Yes, who wants to comment over that? सो गए हो? कोई सुन ही नहीं रहा मेरा ख्याल है. Nobody is listening. लो एक भाग गया. तो कौन बताएगा? Who's awake? सर मैं ये तो नहीं बताना, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है. अच्छा चलो, पहले मुझे इसका तो जवाब दे दो, फिर अगला तुम्हारा सवाल भी हम लेते हैं. सर इसका मैं अभी सही तरह कॉमन से सेंस, स्टडी नहीं कॉमन किया सेंस उसको. क्या? अच्छा चलो, अच्छा ओके. सो लेट मी आस्क, डंग 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 डंग. आई थिंक लास्ट क्लास में जहरा थी. सो जहरा, व्हाट डू यू थिंक? जहरा, आर यू अवेक? Yes, sir, I'm awake. Okay, बताओ फिर मुझे, what do you think? These equations will stay same. Common sense का question है actually, mathematical power है. This is mathematical question. If you change these coordinates like this, मैंने कहा कैसे कर ले, तो क्या फर्क पड़ेगा equations में? कोई फर्क पड़ेगा कि वैसे ही रहेंगी? वैसी रहेंगी. यानी कि EI की यही रिप्रेजेंटेशन रहेगी? हम सर बस रिप्लेस हो जाएंगे y और x के, मतलब जहाँ पे y और वो रिप्लेस हो Absolutely right, absolutely right. So जैसा मर्जी इंटरफेस बन जाए, for example for this case, जहाँ y है मैं इसको x कर देता हूँ, जहाँ z है वहाँ y कर दूंगा, और जहाँ x है वहाँ पर z कर दूंगा. And that's it. That is it. So nothing, no flashy changes. Just change of two variables. Yes, Jamshed, you have a question. सर थीटा आई वर्सेस थीटा आर या फिर थीटा आई वर्सेस थीटा टी, ये कैसा प्लॉट बनेगा? गैमा वर्सेस, हाँ ये प्लॉट नॉन लीनियर बनेगा. ये मेरा ख्याल आपकी पता नहीं बुक में है कि नहीं है, मैं गलत ना बना दूं, मेरे जहन में रफली तो है कैसा होगा. ओके, मैं आपको ना बल्कि मैं आपको इस क्लास के बाद ना इनके प्लॉट्स आपको भेज दूं. वैसे actually you can do it by yourself too. It's a simple MATLAB code. लेकिन what I'm gonna do, Jamshed, I'm gonna send you these plots after the class on Slack. Okay?
Yes sir. लेकिन just to satisfy you right now, you can see this. चलो हम एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को करते हैं. अगर थीटा आई 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. तो इट वुड बी some constant number, right? Let's say कोई ये होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, depending upon n1 and n2. Actually it depends कि n1 greater than n2 है या n2 greater than n1 है. ये रिलेशनशिप डिक्टेट करेंगे कि क्या कैसा कर्व होगा. देयर आर सम इफ्स एंड बट्स. सो लेट्स से अगर ये कांस्टेंट होगा और अगर थीटा आई 90 होगा तो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0 एंड एवरीथिंग बिकम 0. सो थीटा 90 पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो 0 ही होना चाहिए. ठीक है. एंड बीच में नॉन लीनियर होगा. आई एम गोना सेंड यू दिस कर्व. ऑलराइट, नेवर माइंड. लेकिन इसके अंदर ना एक चीज, चलो देखते हैं मैथ की इंट्यूशन किसको है. आपका ख्याल है कि इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट साइन फ्लिप करेगा? मींस के किसी खास एंगल के लिए और गिवन n1 n2 के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेट्स से अगर पॉजिटिव स्टार्ट हुआ तो एक खास एंगल के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा. कैन यू सी दिस थिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? यानी कि इज इट पॉसिबल? Zahra, do you want to answer that? Sir, can you repeat your question? So my question is, all right, let's say I give you n1 as 1 and n2 as an example as 1.5. So we sweep this relationship for various angles, theta I. So can you see mathematically that reflection coefficient can be positive for some angles and for some angles it could be negative? Can you see that? Possible. It's possible, I would say. I won't say always. Because remember, ये थीटा टी क्या है? थीटा टी है n1 sin theta I is equal to n2 sin theta t, and theta t is basically what? n1 over n2 sin inverse. This is theta t. So what we're seeing that theta t and theta I obviously will be different. Or you remember ये cos का function होता है, right? 90 0 और 90 के दरमियान में कॉस नीचे आता है. सो कोई देख सकता है मैथमेटिकली इसको? यस. चलो खैर नेवर माइंड, हम इस पे नहीं. सो it's I'm going to send you these curves. All right, I'm going to send you these curves and I think that would be nice. I should have them with me, but अच्छा चलो यार. Okay, yeah, I don't want to get those. Okay, move on. So कोई सवाल किसी का और? Sir. Yes. Sir, in the last point, if for example, the transmission angle is greater than the incidence angle, so maybe at certain, मतलब very controlled angle, negative हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. That's absolutely right. And if you remember some primary science, जो refracted angle होता है वो बड़ा हो सकता है इंसिडेंट एंगल से. वो याद है आपको? बीम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बीम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट you look over those in terms of light, but those things are true for every electromagnetic wave, not just this light. Okay, so yes, absolutely right. You are right on the money here, that this could be negative and this could be positive depending on the given conditions. And I would send you some good curves, some comprehensive curves, and you can have a better intuition after looking over them. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. So that's TE polarization. Now we will just look over the TM polarization. TM polarization, you recall that in this case, that magnetic field is perpendicular to the plane of incidence. So I'm just gonna quickly draw that thing, and we're not gonna look over those equations. You can now make sense of all those equations by yourself in the interest of time. Oops, ye kya hua? So I'm not
sure why it's doing like this. So let's see. So this is X, this is Z, and this is Y. So this is my incident wave, this is my reflected wave, and this is my transmitted wave. These are the incident angles. They are same now. We know that laws of reflection. So now if the TM case, it's very important, as I said, we need to keep the polarization preserved. So TM case के अंदर, let's say अगर मैं electric field को इस direction में लेता हूँ, right? If this is my incident angle, this is a TM case because electric field is in the plane of incidence. Plane of incidence is the plane containing this K and the normal, which is this guy. So this is EI. So I'm going to preserve EI on all the vectors. So this is my EI because polarization will be preserved. And this is my ER. और इसका तरीका ये है कि आप इस theta I को squish करो. This is squish it. So you see that this EI and this ER would align with each other. So that's how this is correct. So we drew all the TM polarization. Now with respect to this, we will draw the magnetic field. So magnetic field here would be the into the page, and here it would be out of the board, and here it would be this HR and this is HT, and you can do the same equations form so actually yeah, you can write all those equations in the same way as we wrote for the TE case. And for the TE case, actually, why not we look over it from the book? I have the book open in front of me. So you can see this thing that these would be, you can see this book, PDF book. So we have all these EIs. EI अब जो है X और Z form में आ जाएगा, right? So let me actually do this. So yeah, X or Z form में आ जाएगा EI. HI would be simply AY. You can see this, right? On my book. Yes, sir. And HR would be again the EY, and EG would be like that, and as we did that, and we will again invoke those same boundary conditions for Z is equal to 0, and we will get the same conditions and similar conditions, but differently this time. This time you can see this thing. You can see this thing that because ये cosine terms EI और ER के साथ हैं, so ये cosine terms EI और ER के साथ आएंगे, और H के साथ अब कोई cosine term नहीं होगी. H would be simply this equation 193b. And once you solve those, now I will go back to my so once you solve those, so you have this gamma TM, or known as a parallel, or P. It comes out to be a little bit different than the TE case. So let's wait a second. So oops, what I'm doing. So this turns out to be, I think I have it typed here. So this turns out to be, this turns out to be parallel as minus eta 1 cos theta I minus eta 2 cos theta t, or eta 1 cos theta I plus eta 2 cos theta t. ठीक है? And this transmission TM or parallel would be will be 2 eta 2 cos theta I, or eta 1 cos theta I plus eta 2 cos theta t. So that becomes the this thing. Okay, or similarly, you can transform them into the refractive indices as we did for the other thing. And for here,
And for here, this parallel case, in the parallel case, 1 plus gamma Tm is equal to cos theta t over cos theta I t Tm. And remember, these are the amplitude reflection coefficients. So if I ask, if you want to know how much the reflected power, you will simply do that gamma square, and for the transmitted power, you will do 1 minus gamma square. That would be the best way of doing things. Okay. So basically, we figure out the reflection coefficient for both TE and TM case. अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी confusion होगी that what does this all mean that TE and TM case के लिए हमने reflection coefficient and transmission coefficient figure out कर लिया. So what does that, let's connect the dots here and let's build a little bit of intuitive picture here. So this thing that अगर ये दो कंपोनेंट्स हैं एक पोलराइजेशन के ब्लैक एंड ब्लू, एक ऐसे है तो मेरी पोलराइजेशन ये बिल्कुल 45 डिग्री पे होगी, राइट? And okay, I want somebody to be interactive with me so that I know I'm making sense. कौन होगा? Let's say who was present other than Zahra last time? कौन था present? वो खुद ही हो जाए मेरे साथ interactive. कोई होना चाहेगा interactive? So let's see. Hassan, you were there, I think, last time. Do you want to be interactive? No? So what, Hassan? Yes, sir. Hassan, are you sleeping? Please, sir. Game खेल रहे फोन के ऊपर? नहीं sir. तो चलो अच्छी बात है. Yeah, we need to watch our kids like now. जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमने मेक श्योर करना था वो गेम नहीं खेल रहे, स्पेशली मेरा जो केजी ग्रेड का बच्चा है. खैर, नेवर माइंड, आई थॉट यू वर डूइंग द सेम, बट नेवर माइंड. सो ये हमारे दो कंपोनेंट हैं किसी पोलराइजेशन के, ठीक है, राइट? जी सर. इसका जो रिजल्टेंट है दैट वुड बी दिस रेड वन, करेक्ट? यस सर. एंड अगर मैं इनके दरमियान खैर मैंने अब तो डोरी बांध दी है, बट चेंजिंग दोज एंगल्स ऑल द रिजल्टेंट वुड चेंज, और उनके दरमियान फेस डिफरेंस से भी सारी चीजें हो जाएंगी. ठीक हो गया? अब इंट्यूटिवली हमें ये बात का पता है कि एनी पोलराइजेशन वेक्टर व्हिच इज ई, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक इंसिडेंट फील्ड वेक्टर, कैन बी रिजॉल्व्ड इन दोस टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. लेकिन हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होंगे. लेकिन टीई और टीएम केस की ब्यूटी ये है कि लेट्स से अगर मेरा ये एक इंसिडेंट फील्ड है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट फील्ड है, ये यू कैन सी दैट दिस माय स्टाइलस, दिस. जी सर. ठीक है. अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कौन सा होगा? फिलहाल ये वाला मेरा रेड पेन, ठीक है, जो कि 45 डिग्री के ऊपर है, करेक्ट? समझ आया? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप लोगों के हाथ. दिस इज माय के वेक्टर. ओके, दिस इज माय के वेक्टर एंड दिस रेड इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, right? Or this red pen is being resolved into these two components. Correct हो गया? जी सर. अब आप ये देख सकते हो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. इसमें से इस ब्लैक वाले को मैं क्या कह रहा हूं? टीई कंपोनेंट. और ब्लू वाले को क्या कह रहा हूं? टीएम कंपोनेंट, बिकॉज प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज दिस वन. This blue is perfectly lying in the plane of incidence. Correct? Correct? जी सर. अच्छा, अब क्या होगा? कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो लीनियरली पोलराइजेशन हो, सर्कुलर पोलराइजेशन हो, एलिप्टिकल पोलराइजेशन हो, जो मर्जी हो, दुनिया में जो मर्जी वेक्टर हो, we will be able to resolve it into these two components, TE and TM. अब होगा ये कि जब ये वेव आएगी, हिट करेगी एक इंटरफेस के ऊपर, तो ये जो TE कंपोनेंट है that will experience a different reflection coefficient. And TM component will experience a different reflection coefficient, correct? Because दोनों की equations different है mathematically. ठीक है? Yes? जी सर. तो इसका फिर अब होगा क्या? जब वो दोनों different reflection coefficient होगा, जब reflection होगी इस वेव की, तो जो original polarization थी, that might get transformed. Because
TE and TM components will experience different reflection coefficients. आपको पता है polarization की basic science ये है, the two components का magnitude and phase dictate what kind of polarization is this. ठीक है? So that is why we did this for different components. अब सवाल ये है, intuition है, एक intuitive math से तो निकल आया कि gamma TE and gamma TM are different. Intuition ये है क्योंकि दोनों vectors की direction different है. These are two different vectors because both of them have different directions, right? So that's why we have these two reflection coefficients. So इस सारे math का मकसद ये है कि वही बेसिक आपकी हाई स्कूल क्लास का कॉन्सेप्ट कि एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है जिसको हम टी और टीएम का नाम देते हैं एंड दे विल रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट इन जनरल डिफरेंटली, ठीक है, और उनकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के साथ ये होगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टीई और टीएम कंपोनेंट क्योंकि एक एक कंपोनेंट है, दे इटसेल्फ इंडिविजुअली आर लीनियरली पोलराइज्ड बिकॉज दोनों लाइन के ऊपर चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कुड बी एनीथिंग। that's why you have a polarization change of a wave once it gets reflected. ठीक हो गया? Does that make sense of understanding that why we are doing this differently, why we solved for two different distinct polarizations? ठीक हो गया? कोई सवाल किसी का? So, all right, if there is no more question, so let's look over a simple example. Sir, I have a question. Gigi. Sir, can you go to the diagram? All right. Sir, how did you decide the direction of the reflected and the transmitted electric field? So, okay, ये एक important बात है और बहुत सारी बुक्स मैसअप करती हैं, जैसे आपकी हेट इसको मैसअप कर देती है, लेकिन ये आपकी जो दूसरी बुक है दैट डज इट करेक्टली। वो इस तरह करना है कि हम पोलराइजेशन की जो डेफिनेशन है, द पोलराइजेशन डेफिनेशन इज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट ज़हरा? सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अब आप इमेजिन करो अपने हेड के अंदर कि ओके, इमेजिन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। सो ये देखो, लेट्स से ये मेरा ये मैंने वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड फील्ड्स ड्रॉ किए हैं। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, राइट? और ये इंटरफेस है ज़हरा, राइट? Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये मेरा ये वाला पेन, तो मैं जब इनको स्क्विश, तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होना चाहिए। वजह क्योंकि जब मैं इनको स्क्विश करूंगा ये जीरो पे होंगे तो दोनों अलाइन हो जाएंगे, और जब वो ट्रांसमिटेड भी अलाइन होके ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। Does that make sense? Yes, it does make sense. जी। तो ये आपने ख्याल रखना है, इसमें गलती कभी नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने प्रिजर्व रखना है फॉर डिटरमिनिंग एनी पोलराइजेशन, for any so electric field को preserve. This is strictly TE case, this is strictly TM case. इसमें electric field बिल्कुल सारे एक ही direction के अंदर है, और H को flip करोगे यहाँ पर for that because of the pointing vector, all right? और यहाँ पर H ये H pointing vector से ऐसे निकलेगा E cross H के साथ, ठीक हो गया? अच्छा, let's do a quick, let me ask you question. Let's say कि मेरा एक इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसको मैं कहता हूं दिस इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज लेट्स से E minus J 6x plus 8.6z एंड उसको कोई यहां पर हम ये दे देते हैं 4a 4ay। ये TE केस है या TM केस है? By looking over the electric field, you can right away recognize कि ये क्या केस है। Obviously, इसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन है, so this becomes a
TE case, and all the TE relationships will be applicable by just looking over this electric field. And agar मैं आपसे ये कहूँ, how about this one? 4.1 AX plus, not plus, इसको फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, 2.9 A, नहीं A नहीं, AZ E minus J6X plus 8.6Z. ये क्या केस है? What this case will be? You can see this thing that these magnitude and direction vectors are lying in the incidence plane, XZ plane के अंदर lie करें. This is a TM case. और अगर what about this guy? 4.1 AX. अब ये मैं गलत लिखने लगा हूं, हो सकता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर ये वाली ठीक थी, लेकिन just I want to make a point here. Plus 3AY E minus J 6X plus 8.6C. ये कौन बताएगा ये क्या है? Who will tell me? I will give an extra credit for you in the final exam. ये किस किस्म की पोलराइजेशन है? ये कैसे इसको मैं सोचूं, कैसे इसको मैं? Qualitative comments. सर इसको हम TE और TM दोनों में मतलब कर सकते हैं. Yes, absolutely right. So this is basically, this is TE and this is TM. You write them differently. It is same as resolving an electric field as a horizontal and vertical components. So here, being a student of electromagnetics or optics, you don't use the horizontal, vertical or X. You see TE and TM components perpendicular, और उनको फिर अलग अलग सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद उनको एंड पे सुपर इम्पोज कर दो वापस. So that becomes this guy. ठीक है, इस पे तो मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम दूंगा, and that would be fun, I'm sure. लेकिन let's look over what I want to do right now is something. So please send me an email about this. Okay, it was Zahra, right? Yes, sir. Okay, so send me an email on this. 2.9 AZ E minus J. अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हुए. आई डू नॉट नीड टू नो कि मेरा नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, मेरा इंटरफेस किस डायरेक्शन के अंदर, कुछ मुझे जानने की जरूरत खास नहीं है. बाय जस्ट लुकिंग ओवर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन सी एवरीथिंग. बड़ी क्लियर मेरी बात है, ये मेरा होता है k वेक्टर, राइट? So you can see this thing here, k vector is has two components, x and z. So definitely मेरी जो k wave है वो xz plane में है, और मेरी plane of incidence is an xz plane actually. It would be xz plane, मेरी plane of incidence होगी, और मेरा इसके अंदर, इसका मतलब ये मेरे TM cases हैं सारे, और ये जो सारे coefficients हैं वो जो हमने TM केस में ये जो इक्वेशंस मैंने आपको दिखाई थी वो सारे इसको कॉरस्पॉन्ड करेंगे. And you can figure out many things. For example, the first question is type of polarization. You can right away think, actually see this is a TM polarization. Second question is, what is the incident angle? You can figure out this incident angle from many different ways. इस 6 से भी निकाल सकते हैं, because this is k cos theta और sin theta. This is also k cos theta and sin theta. लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं बताई हुई, मुझे बस ये पता है कि मेरा मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 जो है that is epsilon r2 is equal to 2.25. That's the only thing I know. So I don't know the frequency. So what I can do, I can take the ratio of these two components in the form of sines and cosines. So अगर आप इसको देखो गौर से, so basically for the TM case you can see this thing that अब इसको मैं नो ब्रेनर करके करता हूं, बाकी आप इसको खुद ही सॉल्व करना. सो यू कैन सी दिस थिंग दैट सो cos theta 1 और theta I is equal to 4.1, ये वाला जो है, and
या कोई मैग्नीट्यूड भी होगा इसके साथ, E10 कर लेते हैं, and E10 sine theta I is equal to minus 2.9. You can look over those equations which you just wrote. ठीक है, -2.9 या just 2.9 actually, because वो वेक्टर है उस डायरेक्शन के अंदर होगा -az, and you can from here you can take these ratio of these two and you can figure out the incident angle. ये समझ आ रही है ना बात जो मैं कर रहा हूं, right? हाँ सर, प्लीज रिपीट कर दो। तो देखो, okay, I should have, so ये equations आपके सामने लिखी हुई हैं, right? ये TE केस में, I'm giving you an example. You can see this thing TE केस के अंदर, अच्छा चलो TE केस को नहीं देखते, हम फिर वापस चलते हैं. Let me go back to my book. So for TM case, you can see this is my electric field, cos theta I AX minus sin theta I AZ, right? So I can see this thing that cos theta I EI is equal to 4.1 and EI sin theta I is equal to 2.9, right? Because ये मेरी क्वेश्चन है इसकी TM केस की, और इसमें बॉग डाउन नहीं होना, हो सकता है ऑब्वियसली अभी जो प्रॉब्लम है वो वाकई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मैच कर गया है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो सकते हैं, आप राइट वे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप इस इक्वेशन को. अच्छा चलो इसको मैं लिखता हूं, आई थिंक कंफ्यूजन मैंने ज्यादा क्रिएट कर दी है, आई एम नॉट डूइंग इट वेल फॉर यू, सो लेट मी राइट इट डाउन. सो टीएम केस की जो जेनेरिक इक्वेशन है, EI is equal to EI, उसका मैग्नीट्यूड जो भी है cos theta I AX minus sin theta I AZ E minus J beta 1 X sin theta I plus Z cos theta I. What you need to do, simply you compare this equation जो numerical में दी हुई है, numerical values with this symbolic equation. That's it. That's what I'm doing. That EI cos theta I is 4.9 and EI sin theta I is 2.9, and you just figure out the incident angle as 35 degrees, right? Simple thing है, ठीक है भाई? Yes sir. And similarly you can incident angle निकल आएगा, then amplitude कैसे निकलेगा? ये EI, you know that EI cos theta I, अब आपको पता है this one is equal to 4.1, theta I आपने निकाल लिया है, so EI इसका निकल आएगा. You can easily figure out EI as 5 volts per meter, right, by just looking over this equation. और फिर उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए what is the frequency of the wave, F, so आपको पता है frequency will be in the K, so you can see this thing that K या beta in the lossless case, so this you can see that beta sine theta I is equal to what, 6. So beta sine theta I is equal to 6, and from here you can theta I आपको पता है, and from the beta you can figure out the frequency as 500 megahertz by just looking over that electric field. और फिर उसके बाद transmitted angle क्या होगा? Simply Snell's law, n1 sine theta I is equal to n2 sine theta t. n2 पता है, epsilon r2 पता है, n1 पता है, theta I पता है, and you figure out theta t as 22.5 degrees, right? इसको करना आप खुद से solve. I'm just giving you all these numbers here. And फिर उसके बाद expression for electric field and magnetic fields भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. Now you can figure out reflection coefficient for the TM, transmission coefficient for the TM, and you can see this thing ER would be gamma, EI, and all those K's would stay the same. And transmission क्या होगी? TM, EI, magnitude, you will figure it out, and all those would stay as like this.
ठीक हो गया. So that's how you solve these kind of simple electromagnetic problems. And oblique incidence, you can see this thing कि for example जो problems आपको मैंने assignment में दी हैं, you can think like that, you know, वो तो एक simple cases हैं जो normal incidents में शायद ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर it would all be oblique incidents. Then you will be doing the same thing with all these TE and TM cases and considering all the polarization intact there for figuring out all these things. ठीक हो गया? So that's a good numerical example to solve that. So यहाँ पर जो मैं take home message आपको दूंगा, जो आपने बात जिंदगी में नहीं भूलनी, बाकी तो आप चीजें भूल जाओगे बेशक, that any electric field vector or any vector basically is same as the superposition of t. इसमें से एक भी चीज उड़ जाएगी तो that's fine. ठीक है, वो दूसरा वो हो जाएगा. So basically it's a combination of those TE and TM cases. So that's something you need to, and that's why we did it separately. So let's move on and let's look over a familiar concept which you have seen in your high school for in the form of light, but we will do this for any electromagnetic wave. अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों ने वो सब ने देखा होगा a concept of total internal reflection, right, for the light. सबने सुना हुआ है ना ये बात, क्या होती है total internal reflection? Anybody can remind us what is the total internal reflection? कोई बताएगा? Sir, when the incident angle is greater than a certain angle called the critical angle, so then none of the light is transmitted and the whole light reflects back into the same medium from where it was incidented. Yeah, absolutely right. So let me actually show you a quick animation. ये शायद मैंने पहले आप, so you can see this thing. ये नजर आ रही है ना animation आप लोगों को, right? Yes, sir. So you see this thing. This is, अब ये बड़े गौर से देखो आप लोग, ये वेव एक गई है और ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो गई है. लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पर, आप लोगों ने तो बेसिकली यू नो यू विल से रेज में ये गई वेव एंड वापस आ गई, यू कैन सी. लेकिन ये इस मीडियम के इस मीडियम के दूसरी तरफ देयर इज अ लिटिल बिट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, जो अगर आप गौर से देखो वो यहाँ पर इंटेंस है और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गया, एंड देन इट डाइज्ड आउट एंड एवरीथिंग एक्चुअली गोज लाइक दिस. ये सबको नजर आ रही बात? लेट मी एक्चुअली शो यू. ये देखो, सो यू सी दिस थिंग, यहाँ पर बाउंड्री पे इंटेंस है और फिर वो देखो गौर से देखो स्ट्रेंथ कम हो रही है उसकी. कैन यू सी दैट? राइट, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस, Yes, sir. okay, good. So this how we can figure out कि इसकी what you know electromagnetically, let's write down some equations and figure out how this whole thing gets reflected back. And we know that from the light and optics, we know it's a total internal reflection. But remember, ये सारे concepts, these laws of reflection, Snell's law, TIR, they true for all electromagnetic waves. They are not just the properties of light. And इसके अंदर important है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो इंसिडेंट मीडियम का एज कंपेयर टू द ट्रांसमिटेड मीडियम. अच्छा, वो कैसे? लेट्स लुक ओवर इट. थोड़ी सी इंट्यूशन देख लेते हैं. लेट्स से n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. ऐसा ही है ना? So let's say that if n1 is less than n2, as an example, if n1 is less than n2, तो मेरा θ2 किसके इक्वल है? θ2 becomes sin inverse n1 over n2 and sin θ2. ये हैप्पी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें कभी भी कोई फ्लॉ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि sin θ2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? sin θ2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, right? It could be the maximum value is 1.
अगर ये 1 होगी तो n1 n2 जो है वो n1 से ग्रेटर है, तो ये साइन इनवर्स के अंदर जो एंगल आएगा दिस वुड ऑलवेज बी जो एंगल नहीं सॉरी जो वैल्यू आएगी दिस वुड ऑलवेज बी लेस देन 1, और ये साइन इनवर्स लेस देन 1 ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैथमेटिकल बात है। नाउ इफ n1 is greater than n2, then what would happen? अगर n1 greater than n2 है, you can see this thing for after some value of theta 2, ये वाला जो वैल्यू है दिस कैन बिकम ग्रेटर देन 1, और साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज साइन का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें ये 1 है और ये -1 है, ये कभी भी इन दोनों से बड़ा है। और फिर आपका थीटा 2 जो है ना, वो जो आप लोगों ने बचपन में देखा हुआ है वो क्या तो अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। लेकिन आप देखते हैं हम इसको हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। क्या मतलब है इसका अनडिफाइंड? लेट्स ट्राई टू राइट दैट। सो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? व्हाट वी गोना डू इज साइन। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो अगर आप वो इक्वेशंस देखो ना, जो ट्रांसमिटेड फील्ड है, ट्रांसमिटेड फील्ड से मुराद ये है कि अगर ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है, हम क्योंकि ट्रांसमिटेड फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि अगर ट्रांसमिटेड फील्ड 0 होगा तो मुझे कहूंगा कि सारी चीजें रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। ये ट्रांसमिटेड फील्ड, ये जो ट्रांसमिटेड फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इक्वेशन आप देखो, चाहे टीई हो या टीएम हो। एक्चुअली इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम, टीई या टीएम। लेट्स गो बैक टू द बुक। सो इफ यू लुक ओवर दिस क्लोजली, this is the TE transmitted case. This is sin theta TX plus cos theta TZ, जो कि ट्रांसमिशन डायरेक्शन है Z, उसमें cos theta T इन्वॉल्व है TE केस के अंदर। और TM केस के अंदर अभी आप देखो, TM केस के अंदर भी जो ट्रांसमिटेड डायरेक्शन है उसमें जो ट्रांसमिट है उसमें cos theta T लिखा हुआ है एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक है, Z के साथ ही है, Z को चेंज कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसमिटेड डायरेक्शन के अंदर cos theta T लिखा हुआ है। सो I'm gonna say, I'm going to back, I'm going back there, I'm gonna say that जो यानी मैं इस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, I'm just looking over the face because I want to see कि मेरी ट्रांसमिटेड वेव क्यों अटेनुएट हो रही है। x sin theta t प्लस z cos theta t है मेरे एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो मैं cos theta t को लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि sin theta t तो स्नेल्स लॉ से मैं लिख लूंगा, n1 sin theta I is equal to n2 sin theta t, so I can write this thing। लेकिन cos theta t क्या होगा, 1 minus sin square theta t, ये होगा cos theta t, करेक्ट। ठीक है, और दिस वुड बी इक्वल टू, ये स्नेल्स लॉ को ज़हन में रखो, शायद इंट्यूशन से सब लोगों ने किसी ने देख भी लिया होगा मैं किधर जाने लगा हूं। सो दिस वुड बिकम 1 माइनस साइन थीटा टी किसके इक्वल है, n1 ओवर n2 साइन थीटा है, 1 माइनस दिस वुड बिकम n1 ओवर n2 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई। ठीक है, अब आप ये देखो गौर से, सो what is going to happen is that ये जो साइन, ये जब ये वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी, जो कि आप कहते हो when n1 is greater than n2, तो स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा, square root would become what, imaginary, it would become imaginary। So for a critical angle, for an angle after which everything हमें नजर आती होगा, तो ये वाली टर्म जो है ये greater than 1 हो जाएगी। जब ये greater than 1 हो जाएगी, so I can write it in this way, I can also write it in the form of epsilon 1 over epsilon 2, n1 square is epsilon 1, all right, so this would become epsilon 1 epsilon 2 sine square theta I minus 1 and plus minus j।
क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया है। अब आप ये देखो, ये जो इमेजिनरी स्क्वायर रूट है, यू नो दिस कुड बी प्लस माइनस j, मैं इसको अल्फा का नाम दे देता हूं। इसको जब मैं इधर प्लग इन करूंगा ऊपर ट्रांसमिटेड फील्ड में, तो क्या होगा? यू कैन सी दिस थिंग दैट ये जो फेस टर्म है, जो j के साथ एक और j मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट आई वुड गेट? आई वुड गेट अल्फा z। तो जो मेरी ट्रांसमिटेड डायरेक्शन है उसके अंदर दिस इज गोइंग टू डाई डाउन। और ये मैं इसमें ऑब्वियसली आई हैव टू टेक the minus with this because plus j जो है वो blow up कर देगा, so minus j alpha would be the realistic term, so this would become minus alpha 2z, और ये जो alpha जो है that is equal to this thing। अब अगर मैं इसको देखूं गौर से, so जो मेरा transmitted field है that would become some amplitude, you know, some amplitude, ये कुछ भी हो सकता है। और let's say अगर मैं TE देख रहा हूं, तो ये ay direction के अंदर है, and e minus alpha t2z e minus j beta 2 sine theta tx. That would become my transmitted electric field. And you can see this thing for a total internal reflection, this become quickly attenuate because this term, as you go and as you keep on increasing, this can go to any number, and this term would become very large and you blow up. And you can see this is decreasing exponentially as we see here. So that is as we see here, this is an exponential decay. You can see this thing here, it's all exponentially dying here. Make sense? Yes. Does it make sense? क्या हो गया, सो गए सारे? बहुत मुश्किल हो गया काम। Yes, sir, it makes sense. Okay, good. अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, मुझे कौन बताएगा, और एक्स्ट्रा क्रेडिट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपने क्वेश्चन लिख ली है कि अगर मैंने ड्रॉ करना है फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स सी अगर मैं इसको कर सकता हूं, so if I want to draw this function here in the transmitted region, तो मैं कैसा फंक्शन ड्रॉ करूंगा? कोई बता सकता है मुझे? कौन बताएगा? ये इक्वेशन मैंने लिखी है ट्रांसमिटेड फील्ड की, इस ट्रांसमिटेड फील्ड को मैंने ड्रॉ करना है, वो जो मैंने फिगर बनाया, ओके नहीं शेयर ही नहीं ना हो रहा, राइट है, तो एक सेकेंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो ट्रांसमिटेड फील्ड हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, दिस वन, आई वांट टू ड्रॉ दिस ऑन दिस एनिमेशन, तो ये कैसा होगा? ये या नाउ आई कैन ड्रॉ दैट, नहीं कैसा होगा? कौन बताएगा? कोई बताएगा मुझे? Sir, along the interface. अच्छा चलो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। नहीं along the interface इक्वेशन ये है e m e minus alpha z, अल्फा जो है वो एप्सिलॉन, और अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर e minus j beta 2 sin theta t x, और अल्फा जो है वो किसके इक्वल है? अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 sin स्क्वायर थीटा i minus 1। तो ये डैम्प्ड कोसाइन टाइप का फंक्शन होगा, मतलब कोसाइन वेव लेकिन डैम्प्ड। कोसाइन डैम्प्ड, मुझे लिखवा सकती हो मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर? कैन यू हेल्प मी इन राइटिंग इट? No, sir, I'm only guessing it from the figure. Like I'm not able to. Mariam, we need to write it now, माशाल्लाह से, और मुझे पता है you know this. Okay, Mariam is gonna help us. मुझे ये बताओ, this is Mariam, right? मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? Yes, sir. Okay, Mariam, this electric field is in the time domain or complex domain?
Sir, in the complex domain. Can you write the equation for the time domain? Sir, we'll add j omega t e to the power j omega t. So ये क्या बनेगा टाइम डोमेन के अंदर, बताओ जल्दी से. It would become it would have a factor of e to the power j omega t in it. Okay, लेकिन मैं क्या लिखूं? ये em alpha. This is look this is the amplitude, this is the phase, and this is the direction. तो अब मैंने इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है. What it would be? em minus alpha z. आगे क्या लिखूं? या कौन बताएगा if somebody else has figured it out? Anybody has figured it out? नहीं? चलो पर मैं ही लिखता हूं. सो गए हैं मेरा ख्याल आप लोग सारे, एग्जॉस्ट हो गए हैं. यस. sin theta t x and a y डायरेक्शन. और ये जो इंटरफेस था ये कैसे था? ये x था, ये z था, और आउट ऑफ द बोर्ड y है. अब ये बहुत जबरदस्त इंट्यूशन है यहां पर. अगर मैं इस वेव को सिर्फ देखूं, मुझे नजर आ रहा है कि ये वेव जो है प्रोपेगेट किस डायरेक्शन के अंदर कर रही है? प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ए वाई में है, और जो एम्पलीट्यूड है वो जी में डिके हो रहा है. बहुत खूबसूरत मैथ है और बड़ा इजी मैथ है. दोबारा से मैं रिपीट करता हूं. So this is the equation which is telling me that electromagnetic wave is traveling in the x direction. Its vector is in the ay direction, and its amplitude is decreasing in the z direction. Right? समझ आया आप लोगों को? So अब मैं आपको दोबारा एनिमेशन दिखाता हूं और गौर से देखना यही हो रहा है. Let's see that. And this is the so beautiful thing about all this mathematics. गौर से देखो. The wave is traveling on the interface in the x direction. It's attenuating in the z direction. And इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर तो विजिबल नहीं है, लेकिन वो y डायरेक्शन के अंदर है. Y is out of the board. This is the z जो into the green है, और that's x. Right? समझ आई ये बात आप लोगों को? You get that? जो सी ग्रीन में जो आया नेगेटिव वेव्स वगैरह वो एटेन्यूएशन है, और ये आउट ऑफ पेज आ रहा है वाई में. जी जी बिल्कुल ठीक है. So let me actually go back to that Snapchat. So yeah, so this is it. Yeah. So simply देखो, इक्वेशंस को आप जब देखते हैं, यू जस्ट लुक ओवर देयर मैथमेटिकल फॉर्म जो कि बिल्कुल एविडेंट है जो बता रही है. यहां पर हमारी प्रोपगेशन होती है. This is the attenuation and this is the e direction. Mariam, does that make sense? You were with me interactively. Does this make sense? Yes, sir. Okay, good. So I'm gonna stop my recording because I am over time, and we're gonna start. So जो देख रहे हैं अपना ख्याल रखें. I will see you on Monday, and please do not ask extensions for the assignment. आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज नेक्स्ट फ्राइडे हमारी आखिरी असाइनमेंट ड्यू होनी है. उसको आगे ले जा ही नहीं सकते. वी कांट टेक इट अहेड. So yeah, and this Friday there will not be any tutorial. So next Friday will be the tutorial. All right, Allah Hafiz.